Today we discussed about in 6th class English book. Chapter name is Kite. Let's start. Have you ever fallen kites? तुम्हें केबे उड़ी उड़ाइछो कि? Have you ever observed kites when they fly and they lie on the ground? तुम्हें केबे गुड़ी गुड़ी को लक्ष्य करिछो कि जेतेबेले सेमाने उड़ुथांती एवं भूमि उपरे पड़िथांती? Do kites look different when in the air? गुड़ी सबु वायुमंडल रे बा शून्य रे थिला बेले भिन्न बा अलगा प्रकारे देखा जाती कि? Do they also act differently? सेमाने मध्य भिन्न भावरे कार्य करिथांती कि? Second, see the two pictures of kite and guess. आम एठी दुईटी पिक्चर देखी पारे गुड़ी रे छवि दुईटी को देख एवं अनुमान कर। गेस माने अनुमान करिबा। इज इट पॉसिबल टू राइट ए पोएम ऑन दिस टू स्टेज? काइट ऑन द ग्राउंड एंड काइट इन द स्काई। आम एठी दुईटी छवि देखुजे जेतेबेले गुड़ी भूमि उपरे पड़ी थाए एवं आकाश रे उड़ू थाए। लेट्स रीड दिस पोएम एंड सी। आस आमे एई कविता को पढ़िबा एवं देखिबा। ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, बट अप इन द एयर it will dance and sing. A kite in the air will dance and caper, but back on the ground is just string and paper. ଏବେ ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନେବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଭୂମି, ଜଷ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର, ଡାନ୍ସ ମାନେ ନାଚିବା, ସିଂ ମାନେ गीत गाइबा, स्ट्रिंग माने सूता, केपर माने डेइबा, एयर माने पवन। ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। भूमि उपरे पड़िथिबा समय रे गोटिए गुड़ी केवल मात्र कागज और सूता अटे। स्ट्रिंग माने सूता। बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। किंतु उपरे वायुमंडल रे उड़ुथिबा समय रे यह नाचु थाए एवं गीत गाउ थाए। ए काइट इन द एयर विल डांस एंड कैपर। वायुमंडल रे गुड़ीटी नाचे एवं डिए। बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। किंतु भूमि ऊपर को फेरिले यह केवल मात्र सूता और कागज अटे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? आंसर, द पोएम इज अबाउट ए काइट। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट स्पीक्स ऑफ टू सिचुएशन ऑफ ए काइट, व्हाट आर दे? आंसर, काइट ऑन द ग्राउंड एंड काइट इन द एयर। Question number 3, in which situation is the kite more active, in the air or on the ground? Answer, the kite is more active in the air. Question number 4, what does it do when it is in the air? Answer, when the kite is in the air, it dances, sings and capers. Question number 5, how is it when on the ground? Answer, when the kite is on the ground, it is just paper and string. Question number 6, where is the kite very happy, in the air or on the ground? Answer, the kite is very happy in the air. Question number 7, how many stanzas are there in the poem? Answer, there are 2 stanzas in the poem. Question number 8,
What does the first stanza talk about? Answer. The first stanza talks about how the kite is on the ground and up in the air. Question number 9. What does the second stanza talk about? Answer. The second stanza talk about how the kite is in the air and back on the ground. Question number 10. What do the first two lines of the first stanza talk about? Kite on the ground or kite in the air? Answer. The first two lines of the first stanza talk about the kite on the ground. Question number 11. What do the first two lines of the second stanza talk about? Kite on the ground or kite in the air? Answer. The first two lines of the second stanza talk about kite in the air. पेज नंबर 3 रे आमे देखिबा पॉइंट को देखी डेस फिलअप करिबा। पेज नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. What is the poem about? The poem is about a kite. Question number 2. The two status of a kite are kite on the dash and kite dash. First dress re ground, second dress re in the air. Question number 3. What does a kite do when in the air? Answer. When a kite is in the air, it dances, sings and capeers. Question number 4. What do the first two lines of the first stanza talk about? Answer. The first two lines of the first stanza talk about a kite on the ground. Question number 5. What do the first two lines of the second stanza talk about? Answer. The first two lines of the second stanza talk about a kite in the air. Phrase number 5. Give below are 4 pairs of lines on the side and 2 thems on the other side. Match them. एपटे 4टी लाइन लिखा जाइछि, सेपटे 2टी। आमे 4टी जगह 2टी सह काहाकू मैचिंग करा जाइछि ताहा करिबाकू वर्तमान कुआ जाइछि। एभली अधिक शिक्षणीय वीडियो देखिया पई आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु।